Hello everyone. In this video I'm going to discuss with you 12 important question of chapter polynomial. So here is our first question. So first question is find a quadratic polynomial. The sum and product of whose zeros are -5 and -6. So here sum and product of zeros are given. So alpha plus beta is equals to -5 and alpha into beta is equals to 6. So the required polynomial is f of x is equals to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, and this you have to remember, इसको आपको याद रखना है. So now we substitute the value. So right here x square minus alpha plus beta, sum of zeros is -5 into x plus alpha into beta is 6. So we now open the bracket, so we get here x square plus 5x plus 6. The required polynomial is x square plus 5x plus 6, and this is the answer. So now let's move to next question. So next question is find the quadratic polynomial, the sum of whose zeros is √2 and their product is -12. Hence find the zeros of the polynomial. और इस तरीके से हमें zeros of the polynomial find out करना है. So what is given? Sum of whose zeros is given. So alpha plus beta is equals to √2 is given. Alpha plus beta की वैल्यू कितनी दी हुई है? That is √2 and alpha into beta is given -12. So first of all we need to find out a quadratic polynomial. So we write the required quadratic polynomial p of x equals to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. And next step we will write here x square, just simply substitute the values. So √2 into x plus alpha into beta is -12. Then we write here x square minus √2 into x minus 12. So therefore required polynomial is x square minus √2 into x minus 12. Clear? तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गया है. नाउ वी रीड द क्वेश्चन फर्दर. आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन. आगे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी हमें क्या करना है? जीरोज भी फाइंड आउट करने हैं यहाँ से. सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द जीरोज. सो वी राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स माइनस 12 एंड दिस इज पी ऑफ एक्स. राइट, तो हम इसको क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से. तो यहाँ पर हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज 12. सो 12 यानी कि प्रोडक्ट हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 12 हो, और प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए? √2 आना चाहिए. तो हमें ऐसे नंबर मिल जाएंगे 3√2 एंड 2√2. So we write here x square minus 3√2 minus 2√2 into x minus 12. Now we open the bracket, so we get here x square minus 3√2 into x plus 2√2 into x minus 12. Okay, so now we write here we take common. अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेंगे x. So we get here x minus 3√2 and then plus. Now we take here common 2√2. So when we take common, यहाँ से जब हम कॉमन 2√2 ले लेंगे, so we get here x minus 12 is divided by 2√2. So we get here 3√2. So from these two terms we take common x minus 3√2. Then we will have x plus 2√2. So since we need to find out its zeros, so we equate it. हम इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ? हम इसको इक्वेट कर देंगे, हम इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देंगे. सो वी राइट हियर देयरफॉर p of x is equals to 0. So x minus 3√2 into x plus 2√2 is equals to 0.
सो हमें यहाँ पर केस 1 हो जाएगा x माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू 3√2. दिस इज आवर फर्स्ट 0. सेकेंड वन हो जाएगा केस 2. then x plus 2√2 equals to 0 and which is equals to x is equals to minus 2√2. so this is the second 0. clear? so therefore required zeros कौन से हो गए? 3√2 and minus 2√2 are the required zeros. so अपना next question है, if the product of the zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a. हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव गिवन पॉलिनोमियल. सो लेट्स से p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6. सो वी राइट हियर लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of given polynomial. are the zeros of given polynomial. clear? एंड साथ में हमें क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गिवन. क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4 इज गिवन. ओके, एंड नाउ टेल मी कि अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. एक रिलेशनशिप होता है टर्म्स में और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप होती है. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो वी राइट हियर कांस्टेंट टर्म upon coefficient of x square. So that is equals to 1. So constant term is here. We write here minus 6 upon coefficient of x square is a and which is equals to 4. So we do the cross multiplication. So we write here 4a is equals to minus 6. So हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 4 एंड वी कैन सिंप्लीफाइड बाय 2. से हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं. 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स. सो वी गेट हियर a इक्वल्स टू माइनस 3/2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, if one zero of the polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is reciprocal of other. ओके, यानी कि एक पॉलिनोमियल है, उसके 2 जीरोज होते हैं, दैट वी ऑल नो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट्स वाई 2 जीरोज हैं. तो इसमें से एक जो ज़ीरो है वो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है. तो अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव गिवन अ पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को नोट कर देते हैं. ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a. तो लेट करते हैं. क्या लेट करेंगे? 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 ऑफ द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल b, given polynomial b alpha. So therefore other 0 क्या हो जाएगा? That is 1 upon alpha. So we now write product of zeros, और product of zeros equals to क्या होता है? constant term upon coefficient of x square. Constant term upon coefficient of x square. So product of zeros means alpha into 1 upon alpha is equals to constant term is here 6a upon coefficient of x square is a square plus 9. So we can cancel this alpha cancel हो जाएंगे. So we get 1 is equals to 6a upon a square plus 9. So in next step we do the cross multiplication. हम यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. So then we will write a square plus 9 is equals to 6a. That means 6a को लेफ्ट हैंड साइड में आप शिफ्ट कर देंगे. So a square minus 6a plus 9 is equals to 0. अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है.
तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से भी कर सकते हो, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्सपेंशन है किसका, a-3 होल स्क्वायर का। सो वी राइट हियर, कैसे मुझे पता चला, देखिए मैं आपको कर बता देता हूँ। 2 इंटू प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो 2 इंटू a इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, सो आई कैन राइट दिस a-3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं पूरी इक्वेशन का। सो हमें मिल जाएगा a-3 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली वी गेट a इज इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, find the cubic polynomial with the sum of its zeros, sum of the products of zeros taken 2 at a time, and the product of its zeros as 2, -7, -14. So we write the information which is given. So alpha plus beta plus gamma is equals to 2, this is given, and then alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equals to -7, this is also given, and then alpha into beta into gamma is equals to -14, and we need to find what, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का भी होता है। सो वी राइट हियर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हम ये सारी चीज़ें लिख देंगे एंड देन आफ्टर हम क्या कर देंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइंड आउट कर लेंगे। सो वी राइट हियर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज -7 इंटू एक्स -14. So now we will write, so we write here x³ minus 2x square minus 7x plus 14, and this is the required polynomial. This is the required cubic polynomial. Now move to next question. So we have next question, if the zeros of the polynomial, so polynomial is given x³ minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, then find a and b. Okay, so we have given polynomial, so write here p of x equals to x³ minus 3x square plus x plus 1. Okay, so given here the zeros are given, so we write here let alpha equals to a minus b, beta is equals to a, and gamma equals to a plus b. So we know the formula, that is sum of zeros. So we write here alpha plus beta plus gamma, which is sum of zeros, is equals to क्या होता है, coefficient of x square. So we write here coefficient of x square minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. So alpha plus beta plus gamma, we substitute the value. So alpha is given here a minus b plus beta is a plus b is equals to minus, and coefficient of x square is -3. Look here, this is the coefficient of x square upon coefficient of x cube is 1. So here we can cancel minus b and plus b. So we get here 3a is equals to 3 and we get upon 1, so it doesn't matter. So right here a equals to 3 upon 3. So finally we get a is equals to 1. हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई. सो नाउ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सो राइट हियर कॉफिशिएंट of x upon coefficient of
x cube. So we substitute the values here. So alpha is a minus b into beta is a. Clear? So now we write beta is a and gamma is a minus b. No, gamma is a plus b plus gamma is a plus b and alpha is a minus b is equals to coefficient of x is 1 and coefficient of x cube is also 1. So now we multiply, so we get here a square minus ab plus a square plus ab plus a square minus b square, a plus b into a minus b is equals to 1. So we can cancel minus ab and plus ab. So now we will have 1 2 3 3a square minus b square is equal to 1. So now we substitute the value of a which is 1. a की वैल्यू हम यहाँ पे substitute कर देंगे, that is 3 into 1 square minus b square is equals to 1. So we write here 3 into 1 minus b square equals to 1. So 3 minus b square equals to 1. b square को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे और 1 को लेफ्ट हैंड साइड. So we write here 3 minus 1 is equals to b square. So which means b square is equals to 2. So b equals to कितना आ जाएगा आंसर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2. So we get the value of a and the value of b. So our next question is, what number should be subtracted from the polynomial 3x cube plus 10x square minus 14x plus 9 so that 3x minus 2 divides it exactly. तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, डिवीज़न करना होता है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 सो दैट 11 डिवाइड्स इट एग्जैक्टली. 11 डिवाइड्स इट एग्जैक्टली. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 99 आना चाहिए. 11 9 99, तो आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ईजली, राइट. सो हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं. सो राइट हियर 3x minus 2 and then now we have 3x cube plus 10x square minus 14x plus 9. So यहाँ पर कितना है, 3x cube है. So 3x cube is divided by 3x, so we get here x square. So we write here x square. X square is multiplied with 3x. So 3x cube minus 2x square. And now we change the symbol. तो यहाँ से 3x cube cancel. So we get here 12x square minus 14x plus 9. Now we have here 12x square and divide 12x square by 3x. So when we divide, so we get here 4x and that is positive 4x. So we write 4x to 4x into 3x, that is 12x square. 4x into 2 minus 8x. So now we change the symbol, subtraction करना है. So we get here minus 6x plus 9. तो अभी हमारे पास हो गया minus 6x is divided by 3x. So we get here minus 2. So right here minus 2. So minus 6x minus 1 becomes plus 4. We change the symbol. So this can be cancelled or we get here 5. तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 5 आ गया है. तो रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड कितना हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू 5. तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, 5 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए इस पॉलिनोमियल से. तो फिर हम 3x माइनस 2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So our next question is, obtain all zeros of the polynomial. Polynomial is given if two of its zeros are this and this.
So polynomial, we have given a polynomial. So p of x equals to 2x cube minus 4x minus x square plus 2. So first of all, we need to write it in its standard form. So we write here 2x cube minus x square minus 4x plus 2. So as it is given root 2 and minus root 2, और भी क्या given है भाई, root 2 and given minus root 2 are the zeros of p of x. पॉलिनॉमियल के क्या है, जीरोस हैं. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x. क्या हो गए, वो फैक्टर्स हो गए किसके, p ऑफ x के. तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि x प्लस रूट 2, x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 का प्रोडक्ट भी क्या होगा, p ऑफ x का फैक्टर होगा. सो देयरफॉर x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x. सो विच मीन्स, क्या इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया. अभी हमें इसके दूसरे जीरोस फाइंड आउट करने हैं. तो अभी हमें क्या करना होगा, पॉलिनॉमियल को हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. ओके, पॉलिनॉमियल को हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो चलिए डिवाइड कर देते हैं. सो वी राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड देन द पॉलिनॉमियल इज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2. दिस इज गिवन. सो नाउ वी विल राइट एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर, सॉरी 2x से होगा. सो 2x इंटू एक्स स्क्वायर. सो वी राइट हियर 2x क्यूब, 2x माइनस 2. सो वी गेट हियर प्लस, सॉरी वी गेट हियर माइनस 4x. वी सब्ट्रैक्ट दिस, तो वी चेंज द सिंबल. सो वी गेट हियर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल हैव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. अभी हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, माइनस 1 से. सो माइनस 1 टाइम्स वी राइट हियर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. वी चेंज द सिंबल, सो वी गेट हियर 0. ओके, तो आपने बचपन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. सो देन वी विल हैव 2x क्यूब minus x square minus 4x plus 2 is equals to x square minus 2 is the divisor and 2x minus 1 is the quotient and 0 is the remainder. Clear? So in next step we will write here x square minus 2 into 2x minus 1. So x square minus 2 can be written as x plus root 2 into x minus root 2 into 2x minus 1. अभी सिंस हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, इसका हमें सारे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं. तो इसको हम किसके इक्वेट कर देंगे, ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे. तो जब हम ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे यानी कि वी आर इक्वेटिंग p ऑफ x इक्वल्स टू 0. सो विच मीन्स x प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस रूट 2. ये हमारा पहला जीरोज आ गया. x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स x इक्वल्स टू रूट 2. दिस इज आवर सेकेंड जीरो. ओके, and then last is 2x minus 1 equals to 0. So 2x equals to 1 and which is equals to x equals to 1 upon 2 and this is our third zero. So in this way this is a cubic polynomial. So we have find out. So that's why हमें कितने
दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो इस वजह से इसके 3 जीरोज होंगे, और जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, -√2 +√2 एंड 1/2. Now move to next question. So here is next question. If 3 is a zero of the polynomial 2x square plus x plus k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ईजिली हम कर सकते हैं. सो गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, एंड क्या गिवन है, 3 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सो दैट इज 3 इज, अगर 3 इसका ज़ीरो है तो जब हम 3 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल पर रखेंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी. 2x स्क्वायर है, ओके, सो 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. So that means 2 into 9 plus 3 plus k is equals to 0. 9 2 times 18 plus 3 plus k equals to 0. So 21 plus k equals to 0. So k equals to -21, and this is the answer. और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया. और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था. ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था. कितना इजी क्वेश्चन है. Okay, so now let's move to our next. So here is next question. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus 7x plus 5, write the value of alpha plus alpha into beta. So polynomial is given, and that is 2x square plus 7x plus 5. So first of all we will find out alpha plus beta. So alpha plus beta equals to होता है formula -b upon a, so which is equals to minus, and what is the value of b here, b यानी coefficient of x, so that is 7 upon, and a means coefficient of x square, and which is here 2. So then we will find out alpha into beta. So alpha into beta होता है c upon a. c means होता है constant term which is here 5, and a means the coefficient of x square which is here 2. So now we need to find out the value of this alpha plus beta plus alpha into beta. For that we will write, substitute the value alpha plus beta, which is 7 upon 2 plus 5 upon 2, and this is equals to -7 plus 5 is equals to -2 upon 2, and which is equals to -1. तो आंसर क्या हो गया हमारा, -1. So question number 11 is, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 6x square plus x minus 2, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. So polynomial is given, f of x is equals to 6x square plus x minus 2. So first we will find out alpha plus beta. इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है -b upon a, so -1 upon 6. Then we will find out alpha into beta, which is c upon a, and that means -2 upon 6 equals to -1 upon 3. So we need to find out the value of alpha upon beta plus beta upon alpha equals to, we take the LCM, so we will write here alpha and beta, alpha beta will be the LCM, so we will write here alpha square. देखो भाई क्या हो जाएगा, जब यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा बचेगा ना. बीटा से जब आप इसको डिवाइड करोगे, अल्फ़ा बीटा को बीटा से आप डिवाइड करोगे तो बीटा बीटा कैन बी कैंसिल. सो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, बीटा लेफ्ट यहाँ पे बचेगा, तो बीटा इज़ मल्टीप्लाई विद बीटा, सो वी गेट बीटा स्क्वायर. अभी आप ये सोच रहे हो कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो टेंशन नहीं लेना है. आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है. कौन सी आइडेंटिटी इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो वी विल राइट हियर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा. ओके,
So now substitute the value. So alpha plus beta, the value of alpha plus beta is minus 1 upon 6 whole square minus 2 into minus 1 upon 3 and whole upon alpha into beta is minus 1 upon 3. क्लियर? सो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं. सो minus 1 upon 6 whole square means 1 upon 36 and this becomes plus 2 upon 3 upon minus 1 upon 3. So let's solve this. So LCM will be 36, so we get here 1 plus 36 is divided by 3, so we get 12 into 2, so we get 24 and then minus 1 upon 3. So which means that 25 upon 36 upon minus 1 upon 3. Okay, so it means that इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 upon 36 is divided by minus 1 upon 3. So 25 upon 36 is multiplied with minus 3 upon 1. So we can cancel this. So we get here minus 25 upon 12. So therefore alpha upon beta plus beta upon alpha is equals to minus 25 upon 12, and this is the answer. So now our next question is question number 12. So if alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x equals to x square plus x minus 2, then find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta. So we have given polynomial f of x is equals to x square plus x minus 2, यानी कि क्या given है, x square plus x minus 2. This is polynomial is given. So let's find out alpha plus beta. क्या होती है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, लेट्स फाइंड इट आउट. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए एंड विच इज़ इक्वल टू माइनस बी इज़ माइनस 1 अपॉन 1. सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस 1. सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, माइनस 1. नाउ वी विल फाइंड आउट अल्फ़ा इंटू बीटा. सो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है बेटा सी अपॉन ए. सो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू C is minus 2 and A is 1, so alpha beta is equals to minus 2. तो अभी हमें यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है किसकी, 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा. तो पहले से हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन करके देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा आएगा कि नहीं आएगा. तो अभी पहले हमें बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें कैसे पता, चलो देखो बेटा, जब हमें 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा करेंगे तो अल्फ़ा बीटा ले लेंगे हम एलसीएम, तो हमें मिल जाएगा हमें यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा. लो अभी हमें बीटा इक्वेशन ये रख देते हैं, तो बीटा माइनस अल्फ़ा की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है ना, हमें थोड़ी ना बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पता है. यहाँ पर तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज गिवन, नॉट बीटा माइनस अल्फ़ा. सो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा. फॉर दैट वी हैव अनदर आइडेंटिटी. कंफ्यूज टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है और उसकी हेल्प से हमें इसे सॉल्व करना है. तो अभी वो आइडेंटिटी क्या है वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं. तो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab. विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को आपको लर्न कर लेना है. क्या कर लेना है भैया, लर्न कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे, बड़ा पछताओगे. ये सॉन्ग है यार, बड़ा पछताओगे. किसने गाया है, अरिजीत सिंह ने गाया है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab. तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड आउट. हमें बीटा पहले चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, बीटा प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा, यार जो भी करना है कर देना, आपकी मर्जी है. तो बीटा प्लस अल्फ़ा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा. बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, वो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है. नहीं करना तो इसको उधर भेज दो. सो वी राइट हियर बीटा प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर. सो बीटा प्लस अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया है, ये देखो किया है ना. सो वी राइट हियर -1 होल स्क्वायर
-4 इंटू अल्फ़ा बीटा -2 है, टेंशन नहीं लेने का, इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर। सो वी राइट हियर -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो वी राइट हियर 1, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अरे यार -4 इंटू -2 है, सो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो राइट हियर बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, सो 9 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, सो विच मीन्स बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो दैट मीन्स बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9, कितना हो गया, स्क्वायर रूट 9, सो वी विल राइट बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, कितना मिल गया हमें, 3 मिल गया, बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 3। तो बस फ्रॉम इक्वेशन ए सॉल्व कर दो। क्या थे भैया हमारी इक्वेशन है, सो इक्वेशन ए थी 1/α माइनस 1 बीटा इज इक्वल्स टू, हमने ले लिया था एलसीएम और हमें यहाँ मिल गया था ये, तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -2। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, -3/2, एंड दिस इज़ द आंसर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।